Hello everyone, so welcome back to a new video. So in this video we will be covering the whole syllabus of environmental science theory into practice too. So इसमें हम overall जितना भी आपका syllabus है वो सब cover करने वाले हैं, and this is especially for sem 3 students. So इसमें आपको basically आपके syllabus में 3 units हैं. Unit number 5, unit number 6, and unit number 7. So unit number 5 is global environmental issues and policies. Unit number 6 is biodiversity and conservation, and unit number 7 is human communities and the environment. So overall ये तीनों यूनिट हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे. So वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए. वीडियो पसंद आती है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड शेयर दिस वीडियो अमॉन्ग योर फ्रेंड्स. तो फर्स्टली हमें देखना है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स थ्रेट. तो पहले तो बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन करना होगा. सो बायोडाइवर्सिटी या फिर इसको आप बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी बोल सकते हो. सो इट रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द इकोसिस्टम दे फॉर्म. सो बेसिकली इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, all the variety of living organism, even the ecosystem, and all the forms of ecosystem that exist. So it reflects the differences in genes, species, and ecosystems found locally, regionally, and globally. E.O. Wilson, which is basically an American biologist or naturalist. So, according to him, he defined biodiversity in 1988, and he defined it as the diversity of genes within the species and the richness of a species and the variety of ecosystem. So, this diversity is definitely very essential for maintaining ecological balance and supporting life on Earth. नाउ अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी की. सो बायोडाइवर्सिटी को बेसिकली 3 टाइप में कैटेगराइज किया गया है. फर्स्ट इज जीन डाइवर्सिटी, सेकंड इज स्पीसीज डाइवर्सिटी, एंड थर्ड इज इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. सो जीन डाइवर्सिटी बेसिकली रेफर्स टू द डिफरेंसेस इन जीन्स विद इन द इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज. सो दिस वेरिएशन आर रिस्पॉन्सिबल, डेफिनेटली जीन्स किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो साइज, कलर, रेसिस्टेंस टू डिजीज. सो ये जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी जो है ये यही दिखाता है कि कितने डिफरेंसेस है जीन्स में अमॉन्ग द इंडिविजुअल ऑफ अ स्पेसीज. फॉर एग्जाम्पल अगर आप एग्रीकल्चर की बात करो तो जेनेटिक डाइवर्सिटी वहाँ पे भी आप देख सकते हो. जेनेटिक डाइवर्सिटी अलाउज द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज रेसिस्टेंट क्रॉप्स एंड न्यू क्रॉप्स वैरायटी. So it is the foundation of evolution and helps species adapt to changing environment. Preserving genetic diversity ensures the survival and adaptability of species in long term. Now, species diversity. So, species diversity refers to the variety of species present in particular region. कि particular region में कितने variety of species जो है वो present है. ये जो diversity है ये natural और agriculture ecosystem दोनों में visible है. Natural ecosystem क्या होता है? So, natural ecosystem is basically rich in species diversity and provide a wide range of resources like fruit, fuel, fodder, medicines, and man-made ecosystems such as monoculture plantation focus on specific products. इसमें बेसिकली स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स जो कि बेनिफिशियल हो उस पर फोकस किया जाता है, लाइक टिम्बर ऑफरिंग लिमिटेड बायोडाइवर्सिटी. सो सम रीजन्स कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. ये क्वेश्चन आ सकता है आपको कि कुछ रीजन को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्यों कहा जाता है. ये इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे आर एक्सेप्शनली रीच इन स्पेसीज. ये जो एरियाज होते हैं आर होम टू मेनी रेयर एंड endangered species. Globally, there are about 25 hotspots and the host around 20% of the world's plant species. So nation with significant hotspot like India are called mega diverse nations. Protecting these areas is crucial or critical for maintaining global biodiversity. So ये last वाला जो मैंने आपको point बताया, this is very important. So do keep this in your mind. इसके आने के chances बहुत ज़्यादा हैं. Now, ecosystem diversity. So, ecosystem diversity basically it refers to the variety of ecosystems on Earth. कितने ज़्यादा variety of ecosystem Earth में exist करते हैं और क्या क्या और कैसे वो दोनों interconnected है with species, environmental condition. So, ecosystem can be natural like forest, grassland, desert, river, ocean, or man-made like agricultural fields, grazing lands. So, ये जो diversity है, this represents the complex relationship between living organisms and the physical environment. So, ecosystem diversity is essential for maintaining ecological balance, supporting energy flow, recycling nutrients. So, this can be asked कि ecosystem diversity जो है वो क्यों ज़रूरी है. तो basically for maintaining ecological balance, supporting energy flow, recycling nutrients. So, it also emphasizes the role of keystone species. Keystone species क्या होता है उसको हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं. इसमें आपको एग्जाम्पल दे रखा है such as fig, people trees which play a crucial part in sustaining other species in the ecosystem. Now let's talk about the component of ecosystem diversity. So types of ecosystem तो पहले आता है. तो ecosystem diversity जो है it includes terrestrial ecosystem, aquatic ecosystem, even desert species. So terrestrial ecosystem like forest, mountain, aquatics like rivers, lakes, seas, each has its unique characteristics and species that adapt to specific environment conditions. Now, ecosystem structure and function. So, the structure of ecosystem involves various living and non-living components, which definitely make up the ecosystem. And while its function include processes like energy flow, nutrient cycle, because they are definitely interconnected.
रोल ऑफ द कीस्टोन स्पेसीज, तो कीस्टोन स्पेसीज जो होते हैं आर क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम। फॉर एग्जांपल जैसे कि फिग ट्री है, ये फूड प्रोवाइड करता है फॉर मेनी एनिमल्स, इंश्योरिंग द सर्वाइवल ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पेसीज। द रिमूवल ऑफ सच स्पेसीज कैन डिस्टर्ब द इंटायर इकोसिस्टम। Now, what are the methods for measuring biodiversity? So first is alpha diversity. So alpha diversity measures the diversity of species with a single habitat or community. Alpha diversity ऐसे को मेजर करते हैं जिन स्पेसीज का क्या है, तो एक कोई सिंगल हैबिटेट और कम्युनिटी है। इट कंसिडर्स स्पेसीज रिचनेस एंड इवननेस। फॉर एग्जांपल अ डेंस रेन फॉरेस्ट विथ न्यूमरस प्लांट एंड एनिमल स्पेसीज हैज हाई अल्फा डाइवर्सिटी। Second is beta diversity. So beta diversity examines differences in species composition between habitats and communities. It is influenced by environmental factors like altitude, moisture, because यहाँ पे composition आ रहा है between habitat and communities, तो यहाँ पे factors आ जाते हैं like altitude, moisture, ये सारे जो है इसके मेजर को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पेसीज फाउंड इन वेटलैंड इकोसिस्टम डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम दोज इन द डेजर्ट इकोसिस्टम। नाउ थर्ड वन इज गामा डाइवर्सिटी। सो गामा डाइवर्सिटी लुक्स एट ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी ऑफ लार्ज जोग्राफिकल एरिया और लैंडस्केप। सो इट कंबाइंस अल्फा एंड बेटा डाइवर्सिटी टू प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ द इकोसिस्टम्स richness. Importance of ecosystem diversity. So first is stability and productivity. So diverse ecosystem, they are more resilient to environmental stresses such as drought and flood and are more productive in terms of biomass and resources available. So ये जो है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, दे आर मोर स्ट्रॉन्ग, दे आर मोर रेजिलियंट। जब इन्वायरमेंटल स्ट्रेस की बात आती है, दे आर मोर रेजिलियंट अगेंस्ट द ड्राउट एंड फ्लड, और वो प्रोडक्टिव भी बहुत ज़्यादा है बिकॉज जो ecosystem diversity है, they are the main source of biomass and resources availability. For example जो temperate grassland है with multiple plant species are more stable than monoculture. Now habitat and species interaction. So this is the another important importance of ecosystem diversity. So ecosystem diversity supports a wide range of habitats, enabling species to interact and thrive. So it ensures the survival of species through ecological processes like pollination, seed dispersal, predator prey relationship. Third importance is resource availability. So ecosystem diversity provides essential resources like food, water, medicine. For instance, tropical rainforests are a source of fruit, timber, medicinal plants. So क्या क्या threat है biodiversity को? तो पहला threat है habitat loss. Habitat loss is one of the biggest threat to biodiversity. It is the primary cause of the human population growth, industrialization. क्यों पता है जैसे जैसे human population grow हो रहा है या फिर industrialization हो रहा है, and it changed the land use, और इस वजह से habitat loss हो रहा है। Forest, grasslands को convert किया जा रहा है into agricultural land और urban areas. So natural ecosystems are being destroyed. Wetlands are drained for farming, mangroves are cleared for prawn farming and firewood. So ये जो है disappearance of aquatic species reduces breeding habitats for marine fish, overgrazing degrades the grassland, and deforestation for timber, monoculture plantation like teak, shal harms the forest biodiversity. So this is how habitat का loss होते जा रहा है with the increasing human population, industrialization, changing use of the land. Now the second is poaching. So poaching एक illegal hunting और trade है of wildlife for economic benefit. बहुत सारे animals are being targeted for their valuable body parts, जैसे कि tiger को पोच किया जा रहा है for skin, bones, elephant ivory, rhinoceros का horns, musk for deer for perfume. So bird, tortoise, exotic animals are smuggled for the pet trade. Medicinal plants like Rauwolfia, datura, along with the ornamental plants like orchids are over harvested for illegal trade. थर्ड इज ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट. सो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट अगर कर रहा है, लाइक व्हेन एनिमल वेंचर इनटू ह्यूमन सेटलमेंट ड्यू टू श्रिंकिंग फॉरेस्ट कवर एंड द लैक ऑफ रिसोर्सेज लाइक फूड एंड वाटर, अगर फॉरेस्ट में लैक ऑफ रिसोर्स हो जाए फूड एंड वाटर का, या फिर फॉरेस्ट का कवर जो है वो श्रिंक कर जाए, कम पड़ जाए, तो क्या हो जाता है कि ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट अकर करता है. फॉर एग्जाम्पल इन संबलपुर ओडिशा में क्या हुआ था कि एलिफेंट्स किल्ड 195 ह्यूमंस ओवर 5 years, leading to villagers to retaliate by, और तो फिर in return villagers ने भी 98 elephant को किया to protect themselves. Similarly ये conflicts occur कर सकता है, and it also occurred in case of tiger, leopard, causing injuries and death. So these conflicts are often worsened by inadequate government compensation for damages, creating tension between villagers and the forest authorities. Fourth is endangered and endemic species. So endangered species क्या होते हैं? So endangered species वो हैं which those are at the risk of extinction due to habitat destruction, poaching and other human activities. ये species basically they include tiger, rhinos, elephant, vultures, certain orchids. So they are classified into categories like vulnerable, rare, immediate, threatened.
So endangered species are now mostly found in protected areas like national parks. And what is endemic species? So endemic species आर यूनिक टू स्पेसिफिक रीजंस, और वो हर जगह नहीं पाए जाते हैं, वो किसी किसी स्पेसिफिक जगह पाए जाते हैं. लाइक इंडिया इज अ होम टू सेवरल एंडेमिक स्पेसीज सच एज इंडियन वाइल्ड एस, कश्मीरी स्टैग, गोल्डन लैंगर, पिग्मी होग. सो ये सारे स्पेसीज आर वेरी स्ट्रिक्टेड इन देयर हैबिटेट्स, मेकिंग देम हाईली वनरेबल टू एनवायरमेंटल चेंज. नाउ अब क्या क्या कंजर्वेशन एफर्ट्स लिए जा रहे हैं? सो टू एड्रेस दीज थ्रेड्स, इंडिया ने बहुत सारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट्स इम्प्लीमेंट किए हैं, विच कैटेगराइजेस प्लांट्स एनिमल बेस्ड ऑन देयर लेवल ऑफ इंडेंजरमेंट एंड प्रोटेक्टेड एरियाज लाइक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, इनको स्टैब्लिश किया जा रहा है टू सेफ गार्ड दीज स्पेसीज. सो एफर्ट्स टू रीस्टोर हैबिटेट, रेगुलेट पोचिंग एंड मैनेज ह्यूमन वाइल्ड लाइफ आर क्रूशियल फॉर conserving biodiversity. Now, in situ conservation. So, in situ conservation basically is the process of protecting and preserving species in their natural environment. ये जो method है basically it involves creating protected areas. इसमें हम protected areas create करते हैं such as national park, wildlife sanctuaries, biosphere reserves, जहाँ पे animals और plants जो हैं वो रह सकते हैं without human interference. So, in India there are 589 protected areas which include 89 national parks and 500 wildlife sanctuaries. Some example of successful in situ conservation include Kaziranga National Park which protects elephants and wild boars. तो ये सारे आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं इन सितु कंजर्वेशन के, जो कि सक्सेसफुल हो चुके हैं. सो बेसिकली इन सितु कंजर्वेशन, इसमें हम नेचुरल स्पेस क्रिएट करते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व स्पीसीज. Now, ex situ conservation basically on the other hand it involves protecting species outside their natural habitat. इस सब natural habitat के outside उसको protect करते हैं, usually in controlled environment like zoological parks, botanical gardens. ये जो approach है is particularly useful for endangered species that may be risk in the wild. So, ex situ conservation जो होता है it includes breeding programs in zoos where animals are bred in safe conditions and gene banks are used to store genetic material for future use, ताकि जो पर्टिकुलर इंडेंजर्ड स्पीसीज है वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए, इसलिए उनके जीन को प्रिजर्व करके रखा जाता है. Now, conservation of cultivators and livestock breed. So, in addition to wild species, conservation efforts जो है, it also focuses on traditional crops. Traditional crop varieties पे भी उनके breed को भी protect करने पे focus किया जा रहा है. So, many of the traditional variety of crops like rice have been replaced by high valuable ending. अब उनको modern means के साथ replace किया जा रहा है. However, these traditional crops hold valuable genetic traits such as resistant to disease. So, but जो traditional वाले हैं, उनके पास ज़्यादा valuable traits हैं, जैसे कि वो खुद उनमें उनके पास resistant होता है to protect to fight against diseases which are essential for future food security. So, इन सारे को भी कंजर्व किया जा रहा है कि वो मॉडर्न मीन्स के साथ जो ट्रेडिशनल वेराइटीज है क्रॉप्स का वो लॉस ना हो. बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002. सो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट क्या था? सो टू प्रोटेक्ट द रीच बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002 इसको पास किया गया. इस एक्ट का बेसिकली एम है टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, प्रमोट द सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कॉम्पोनेंट एंड इंश्योर द बेनिफिट डिराइव फ्रॉम बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी दैट आर शेयर्ड फेयरली. ये जो एक्ट था इसको स्टैब्लिश किया गया. नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, it regulate the use of biological resources and traditional knowledge. It also introduced measures to prevent unauthorized transfer of genetic material outside India. So it ensures the local communities have a say in the use of their resources. Now, what are the need for conserving biodiversity? So biodiversity को conserve करने की need क्यों पड़ी? So conserving biodiversity is essential because it supports all life on earth. It provides many benefits such as food, medicine, clean air, water. So इसलिए biodiversity को protect करने की ज़रूरत है. Biodiversity also helps to maintain ecosystem functions like pollination, water purification, climate regulation. So we cannot predict which species will be useful in future. इसलिए उनको preserve करके biodiversity रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. We need to study sustainable development and its importance. So, sustainable development basically a concept है. It focuses on improving the lives of people today without harming, without compromising the ability of future generation to meet their own needs. So, it is about creating progress in a way which balances the environment, society and economy. और ये आने वाले future generation की ability को hamper ना करे, उसको compromise ना करे. Sustainable development takes an account the need for all the people. दूसरों के need, जो people के need है उसको account में लेता है, including those who are poor, disadvantaged, while making sure जो हमारे एक्शन है वो इन्वायरमेंट को डैमेज ना करे इन लॉन्ग टर्म. सो इट मीन्स फाइंडिंग वेज टू इम्प्रूव आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ टुडे व्हाइल इंश्योरिंग द प्लैनेट मीट्स हेल्दी फॉर फ्यूचर जनरेशन.
सो एनवायरमेंट कंसिडरेशन इन डेवलपमेंट्स की जरूरत क्या पड़ी? सो व्हेन प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, इट इज एसेंशियल टू थिंक अबाउट द इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट, कि अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये भी जरूरी है कि हम ये सोचें कि ये एनवायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट कर सकता है। बहुत सारे लार्ज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सच एज बिल्डिंग रोड्स, माइनिंग, कंस्ट्रक्टिंग डैम्स, ये इकोसिस्टम को हार्म कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कटिंग डाउन अ फॉरेस्ट, रिड्यूस बायोडाइवर्सिटी, वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल, हार्म द एयर and water quality. Additionally, industries can pollute air and water, creating long-term environment problem. So, for a project to be approved, an environmental impact assessment should be carried out, जिसे पता चले to understand its potential harm, कि environment को कितना harm होगा, कैसे harm होगा. So, without this, project should not be allowed to proceed. इसके बिना project को allow नहीं करना चाहिए आगे proceed होने के लिए. Citizens का भी रोल होता है in sustainable development. Like citizen can ensure sustainable development. If a project is causing environmental harm, तो पीपल के लिए ज़रूरी है कि वो इस प्रॉब्लम को जाके अथॉरिटीज़ के पास रिपोर्ट करे, सच एज़ लोकल गवर्नमेंट और पॉल्यूशन कंट्रोल एजेंसीज. So the citizens should also ensure that new projects in their areas are designed to protect the environment following proper rules and regulations. What are the types of sustainability? So यहाँ पे आपको basically 3 type of sustainability पढ़ने हैं. So first one is environmental sustainability. So environmental sustainability is all about protecting the environment for allowing for growth. So it includes practice like saving water, reducing waste, using energy wisely, and protecting plant and animals. Economic sustainability is basically about managing resources. इसमें you need to find a way that allows companies and societies to keep growing without using up all the resources. आपको सारे resources को use up नहीं करना है और फिर भी आपको grow करना है. So this is about managing resources. It's about balancing cost and profits to ensure that a company can continue to thrive in long term. Then the third one is social sustainability. So social sustainability is about building strong, stable communities. So it focuses on improving social well-being by ensuring that everyone needs, हर किसी का need meet हो रहा है, especially those who are poor and vulnerable groups. इंट्रोडक्शन टू ग्लोबल चैलेंज. तो ग्लोबल चैलेंज बेसिकली आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो गया. इट इज़ इनसिग्निफिकेंट अंडर प्रेशर ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन. जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होते जा रहा है. डिमांड फॉर रिसोर्सेज सच एज फूड, वाटर, हाउसिंग, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब भी इंक्रीज होते जा रहा है. दिस इज ग्रोइंग द डिमांड. अगर ऐसे ही ये डिमांड ग्रो करते रहा तो दिस कैन लीड टू ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज which can result in pollution, environmental degradation. So ये major challenge है now to balance the need for development and the need of protect our environment. So हमें environment को protect करना है और development के need को भी meet करना है to ensure that natural resources जो उसको ज़्यादा deplete ना किया जाए and pollution is reduced. Climate change a growing concern. Climate change जो है refers to a long-term shift in global weather patterns and temperature. So over past decades, average temperature of the earth जो है वो increase हो गया with global surface temperature rising up to 0.6 degrees Celsius. In 1990s, where the warmest decade recorded in some regions, especially in Asia and Africa, this has been a rise of frequency and intensity of the droughts. वैसे क्लाइमेट चेंज का फैक्टर क्या है? सो मेजर फैक्टर इसका ग्लोबल वार्मिंग है. सो ग्लोबल वार्मिंग इज द मेजर फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू क्लाइमेट चेंज, ड्रिवन प्राइमरली बाय द इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड. सो ग्रीन हाउस गैस जो है वो हीट को ट्रैप कर लेते हैं फ्रॉम द सन इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर, कीपिंग द प्लैनेट warm enough to support life. So, however, human activities, जैसे particularly burning of fossil fuels for energy, have caused CO2 level to rise drastically since the industrial revolution. So, without greenhouse effect, Earth जो होगा वो बहुत ज़्यादा cold हो जाएगा to sustain life. But the excess buildup of greenhouse gas due to human activities is causing global temperature. So, इसको balance में रखना ज़रूरी है. ये भी ना कि अब greenhouse effect हो ही ना और ये भी ना कि greenhouse effect बहुत ज़्यादा हो जाए. So, although internal agreements जो है उसको बनाया गया है to reduce the emission of the greenhouse गैसेस सच एज पेरिस एग्रीमेंट वगैरह इस पे किया गया है ताकि ये ग्रीन हाउस का जो इमिशन है उसको कंट्रोल में लाया जा सके. नाउ एसी ड्रेन क्या है? सो एसी ड्रेन एक टाइप का पॉल्यूशन है कॉज्ड बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल सच एज कोल, ऑयल, नेचुरल गैस. और ये सारे फ्यूल को जब बर्न किया जाता है सो दे रिलीज हार्मफुल केमिकल सच एज सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर. और ये सारे केमिकल फिर जाके वाटर अदर सब्सटेंसेस जो कि एयर में होते हैं उससे रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड. और फिर वो बन जाते हैं एसिड्स एंड दे कैरीड बाय बेंड करंट्स इनटू द एटमॉस्फेयर एंड इवेंचुअली फॉल बैक टू अर्थ एज एसिड रेन, एसिड स्नो और एसिड फॉल. और ये सारे एसिड्स इन द एयर कैन ऑल्सो एग्जिस्ट एज ड्राई पार्टिकल गैसेज विच व्हेन washed by rain makes the solution even more corrosive. So ये जो process is this is known as acid disposition. So now environmental effect of acid rain. Acid rain कैसे environment को affect करता है? So acid rain has significant harmful effect on environment. So it dissolves important nutrients in the soil that plant need to grow. It also releases toxic substances like aluminium, mercury into the soil which can poison plants and pollute water. The acid rain directly harms trees by breaking down protective coating leaves, creating holes, causing brown spots and interferes with the photosynthesis. So ये जो है
ट्री को भी वीक कर देता है, मेकिंग दे मोर वनरेबल टू पेस्ट, ड्राउट्स एंड एक्सट्रीम वेदर कंडीशन. फॉरेस्ट, स्पेशली दोज एट हायर elevation, suffer the most from acid rain. So acid rain also damage the aquatic ecosystem as it lowers the pH of रिवर और लेक के पीएच को कम कर देता है, वाइल वेटलैंड्स के पीएच को कम कर देता है, मेकिंग द वाटर टू एसिडिक फॉर मेनी प्लांट एनिमल्स टू सर्वाइव. नाउ इसका वाइल्ड लाइफ पे क्या इफेक्ट होता है? द इफेक्ट ऑफ एसिड रेन कैन डिस्टर्ब द इंटायर फूड चेन. पूरे फूड चेन को डिस्टर्ब कर सकता है. सर्टेन aquatic species like clams, mayflies cannot survive in acidic water as their population decline. Other species like frogs that depend on them for food also suffer. So this can affect entire ecosystem as land animals that rely on aquatic organism can also be impacted. So अब इस एसिड रेन को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? सो टू प्रिवेंट एसिड रेन, इसका मेन एसेंशियल है कि हम सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के एमिशन को लोअर कर दें, उसको रिड्यूस कर दें. सो ये हम कैसे कर सकते हैं? बाय यूजिंग क्लीनर सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक नेचुरल गैस इंस्टेड ऑफ कोल, बाय इंप्रूविंग फ्यूल एफिशिएंसी इन व्हीकल्स. इंडस्ट्रीज कैन ऑल्सो इंस्टॉल टेक्नोलॉजी सच एज स्क्रबर्स इन स्मोक स्टेक्स to capture sulfur gases before they enter the atmosphere. Vehicles can also use catalytic converters to reduce the harmful gases emitted in exhaust fumes. So ये सारे steps लेके हम एसिड रेन को रिड्यूस कर सकते हैं. ओजोन लेयर डिप्लीशन. So first we need to understand ओजोन लेयर होता क्या. So ओजोन layer of gas are located 20 to 50 kilometers above Earth's surface. So it is essential for life on Earth because it absorbs harmful ultraviolet rays radiation from the sun, and UV radiation can cause skin cancer, cataracts and other health problem in human and can also damage plant and animals. So ozone layer basically उससे protect करने का काम करता है, उसको observe करता है. Now what are the threats to ozone layer? So 1970s में scientists discovered that chemical called chlorofluorocarbons found in products like refrigerators, spray, aerosols, so were causing damage to the ozone layer. ये सब जो है so ozone layer को damage कर रहा है. ये CSF ये जो केमिकल है, it reaches the stratosphere. UV radiation breaks them down and releasing chlorine atoms that destroy ozone molecules. So this has led to thinning of the ozone layer, जिस कारण से जो ozone layer है वो thin होते जा रहा है, particularly above Antarctica and also in regions like Australia. Although CFCs are now banned in most countries, other chemicals like bromine, nitrous oxide from fertilizers also continue to ozone depletion. So ozone depletion का क्या क्या consequence हो सकता है? अगर ozone जो layer जो वो thin हुआ, so ज़्यादा से ज़्यादा UV rays radiation जो है वो अर्थ पे reach करेगा. That will increase the risk of skin cancer, cataracts in human. It can also harm crops, reduce plankton's population, disrupt food chain as vegetation decreases, more carbon dioxide accumulates in the atmosphere contributing to climate change. So this has serious long-term consequences for both human health and the environment. So ozone layer को protect करने के लिए efforts भी लिए जा रहे हैं. Like in 1987 Montreal Protocol sign किया गया था to phase out the use of CSFL and other harmful chemicals. So as a result, ozone layer is expected to slowly recover over the next several decades. Nuclear accidents and nuclear holocaust. So dangers of nuclear energy. So nuclear energy को develop किया गया था as a clean and efficient alternative to fossil fuels, but it also comes with serious risk. Nuclear accidents like one at Chernobyl can cause widespread harm, including loss of life, long-term health problems, and environmental destruction. So न्यूक्लियर एनर्जी इतना ही ज़्यादा हेल्पफुल है एज अ क्लीन एंड एफिशिएंट अल्टरनेटिव फॉर फॉसिल फ्यूल, उतना ही ज़्यादा सीरियस रिस्क के साथ आता है. इट कैन इवन लीड टू एक्सीडेंट्स सच एज लॉस ऑफ लाइफ, लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम एंड environmental destruction. Radioactive fallout from nuclear accidents can lead to cancer, genetic disorder, and death. So its effects can last for decades, making certain areas inhabitable. Nuclear weapons and the impact of war. So use of nuclear weapons in war has also devastating consequences, like bombing of Hiroshima, Nagasaki in 1947 during World War II are most notorious example of न्यूक्लियर वारफेयर. सो बॉम्ब्स जो है वो thousands of people को मार सकते हैं instantly, causing severe radiation sickness, long term health problems including cancer, genetic mutation. So in survivors, this effect of these bombs continue to affect people today. इसके इफेक्ट आज तक है, मतलब it can last till decades, and legacy of the nuclear welfare remains a sober reminder of the destructive power of the nuclear energy. What is the lasting impact of nuclear disaster? So nuclear accidents and war have lasting scars on human population and the environment. The radioactive fallout continues to affect future generation, causing health issues, environmental damage, and a disruption to local ecosystems. The consequences of nuclear disaster are not just immediate but affects the world for decades to come, and the fear of nuclear accidents and war are prompted to efforts widespread to reduce nuclear risk and promote peace and
Environmental laws and legislation in India. So traditional times से ancient time से ही people had simple but effective rules and practices to protect nature. Over time जैसे जैसे हमारा जो India develop हुआ, more formal environmental laws जो है वो established हुए to manage and protect natural resources. Like अगर आज के time पे देखें तो there are several important laws such as Indian Motor Vehicle Act, in Indian Forest Act, the Water Prevention and Control of the Pollution Act. So these are designed to protect environment. So Indian Constitution also empowers the state to protect the environment, including public health, forest, wildlife, natural resources for the benefit of all citizens. सो इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 क्या है? सो इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 में इसको पास किया गया था. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट लॉ प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ इन इंडिया. सो ये जो लॉ है, इट रेगुलेट्स हंटिंग एंड द ट्रेड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स एंड द प्रोडक्ट, इंश्योरिंग जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है वो प्रोटेक्टेड रहे. ये एक्ट अलाउ करता है for the creation of wildlife sanctuaries, national parks, and imposes penalties for violating its rule. So it was amended in 1982 to allow capture the movement of wild animals for scientific research and management. So in 1991, it was further adapted to focus on protecting certain endangered plant and regulate zoos. So some important features of this act include, so अगर इसका देखें तो it set up वाइल्ड एडवाइजरी बोर्ड एंड असाइंस ड्यूटीज टू वाइल्ड वार्डन. सो ये लिस्ट बनाता है कि कौन कौन से endangered स्पेसीज है एंड प्रोहिबिट्स देयर हंटिंग, उनकी हंटिंग पर रोक लगाता है. इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू endangered प्लांट एंड कंट्रोल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ. इट establishes द सेंट्रल जू अथॉरिटी टू मैनेज जूज एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन. ये एक्ट जो है इट ऑल्सो इम्पोजेस सेवियर पेनल्टीज ऑन दोज हु हार्म वाइल्ड लाइफ. The environment and its importance. So word environment जो है, it refers to everything that surrounds us, both living and non-living thing. The environment include plant, animal, water, air, sunlight, even microorganisms. So these elements work together in a balanced system to sustain life on earth. The environment provides us with everything we need. जो भी हमें चाहिए होता है environment हमें वो देता है, such as food, clean water, air, material for making things. Unfortunately human activities जैसे कि over consumption, pollution, ये उनको severe damage पहुंचाती है. As a result earth का जो नेचुरल सिस्टम है फेसिंग डिग्रेडेशन, लीडिंग टू प्रॉब्लम्स लाइक क्लाइमेट चेंज, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट. एजुकेशन, अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल इश्यूज, ये हेल्प कर सकते हैं पीपल को टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन एंड टेक एक्शंस टू रिड्यूस पॉल्यूशन एंड वेस्ट. The Water Act 1974. So Water Act 1974, it created to address the problem of water pollution in India. It defines water pollution as a discharge of harmful substances such as sewage, industrial waste into rivers, lake and other water bodies, which makes the water unsafe for human and animal life. So ये law जो है, it leads to the creation of Central Pollution Control Board and State Pollution Control Board. ये जो boards है, these are responsible for setting and enforcing water quality standards. So इसके अगर key functions की आप बात करो, so setting standards for water quality and taking actions when water is polluted. It created nationwide programs to prevent and control water pollution. It provided advice and technical help to state board and industries, inspecting and monitoring disposal of sewage, industrial waste, taking legal action against industries that do not follow pollution control rules. So industries that produce waste must be permission from the pollution board before discharging waste into water. So yes, अगर pollution जो है exceed कर गया safe limit से, तो board can stop the industry from discharging waste. The Water Act plays a essential role in making sure कि water bodies जो है वो clean रहे, safe रहे for people and the wildlife. फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980. सो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 इंट्रोड्यूस किया गया था टू स्टॉप डिफॉरेस्टेशन, जो कि इकोलॉजिकल डैमेज और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम कॉज करता है. द मेन गोल इस एक्ट का ये है टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट बाय लिमिटिंग द यूज ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस लाइक माइनिंग, कॉमर्शियल प्लांटेशन. सो इट मेक is it illegal for state government or other authorities to remove forest land from reserve categories without getting major prior approval from the central government. अगर इसके मेन फीचर्स की बात करो तो स्ट्रिक्ट रूल ऑन फॉरेस्ट लैंड्स, लाइक ये एक्ट जो ये परमिट करता है फॉरेस्ट को टू बी यूज्ड ओनली फॉर फॉरेस्ट्री रिलेटेड एक्टिविटीज सच एज ग्रोइंग, मेंटेनिंग ट्रीज. अगर इफ स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहती है टू यूज फॉरेस्ट लैंड फॉर अदर एक्टिविटीज तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी. फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड फंडिंग, ये एक्ट इंक्लूड करता है प्रोविजन टू प्रोटेक्ट ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट एंड क्रिएट एडवाइजरी कमिटी दैट recommends funding for forest conservation efforts. ये इलीगल एक्टिविटीज को प्रिवेंट करने में मेजर रोल प्ले करते हैं. लाइक टैक्स कॉल फॉर इमीडिएट हॉल्ट to any illegal activity such as unauthorized trees cutting, land use within forest areas.
Air Prevention and Control Pollution Act 1981. So Air Prevention and Control Pollution Act 1981 इसका aim है to reduce air pollution in India by controlling the release of harmful pollutant into the atmosphere. ये act define करता है air pollutant को as any harmful substance, whether solid, liquid, gas that can damage the health of human, animal, plant, environment. ये act को basically empower करता है central government, state pollution control. ये act basically इसका main अगर prohibition देखो तो ये है कि it advises central government on improving air quality and coordinates the national program to prevent and control air pollution. So इसके लिए जो बोर्ड सेटअप किया गया था, सेंट्रल एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है फॉर सेटिंग एंड मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स अक्रॉस द कंट्री. दे ऑल्सो प्रोवाइड गाइडलाइंस एंड टू इंडस्ट्रीज की कैसे पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स वो यूज कर सकते हैं. मॉनिटरिंग इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स की इंडस्ट्रीज को कितना ज़्यादा इसको अप्रूवल लेना पड़ेगा फ्रॉम ऑथोरिटीज बिफोर स्टार्टिंग ऑपरेशंस. लाइक दे रिक्वायर टू फॉलो स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस फॉर कंट्रोलिंग एमिशंस एंड रिड्यूसिंग पॉल्यूशन. कंट्रोलर जोन्स लाइक एक्ट अलाउज गवर्नमेंट टू clear certain areas as air pollution control zones where specific fuels or application को ban किया जाएगा to reduce pollution. Inspection and enforcement. The authorities are given the power to inspect industries and take actions against those violating air pollution norms, including collecting air samples for analyzing. So नेक्स्ट एक्ट है एनवायरमेंट एक्ट 1986. सो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को क्रिएट किया गया था टू एड्रेस ग्लोइंग एनवायरमेंटल कंसर्न्स इन इंडिया एंड टू एस्टैब्लिश अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. ये एक्ट जो है डिफाइन करता है एनवायरमेंट को, इंक्लूडिंग एयर, वाटर, लैंड एंड इंटरेक्शन बिटवीन दीज एलिमेंट एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन, प्लांट, एनिमल. ये एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को अथॉरिटी देता है टू टेक नेसेसरी स्टेप टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव एनवायरमेंट. इसके सम की प्रोविजन क्या है? कोऑर्डिनेशन ऑफ एनवायरमेंटल एफर्ट्स. लाइक ये एक्ट जो है इट अलाउज सेंट्रल गवर्नमेंट टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज एंड अदर एजेंसीज टू वर्क टुगेदर टू एड्रेस एंड प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट. दूसरा, सेटिंग पॉल्यूशन स्टैंडर्ड्स. गवर्नमेंट को पावर देती है टू सेट लिमिट्स ऑन पॉल्यूटेंट्स इन एयर, वाटर, सॉइल टू एस्टैब्लिश सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉर हैंडलिंग hazardous substances. Third, hazardous substances. Like this act allows the government to identify substances that pose a risk to the environment and public health. एक्सीडेंट्स. लाइक ये एक्ट जो है ये मैंडेट्स करता है कि सेफ्टी मेजर्स लिए जाए टू पुट इन प्लेस टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स दैट कुड लीड टू एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड इट आउटलाइंस प्रोसीड्यूर्स डीलिंग विद पॉल्यूशन इंसिडेंट्स. फिफ्थ इज रिसर्च एंड एजुकेशन. ये एक्ट सपोर्ट करता है रिसर्च इनटू एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड डेवलप टेक्नोलॉजीज टू रिड्यूस पॉल्यूशन. इट ऑल्सो प्रमोट्स एनवायरमेंटल एजुकेशन टू मेक people aware about the environmental challenges, the environmental problems. Sixth is regulating industries. So this act gives government the power कि वो industries को inspect करे, plants, processes that may risk environmental damage, and they can also direct these entities to take measures to reduce their environmental impact.